Hello all. So let's begin the chapter 3, that is product development. So we will, study the entire, I guess it will take two lectures, but yeah, let's see how it progresses. So chapter 3, product development. Now, what are the learning outcomes of this chapter? So first is understand the concept of minimum viable product, that is MVP, and its importance in startup development. फिर आ जाता है exploring the journey towards achieving the product market fit and its significance for the startup success. वो चीज़ आ जाती है. फिर थर्ड आ जाती है analyzing the practical case studies of successful startups, focusing on the progression from एमवीपी टू पीएमएफ पे कैसे जाते हैं वो पढ़ लेंगे. फिर आ जाता है स्टडिंग द प्रोटोटाइप एंड अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज टेलर्ड फॉर द टेक स्टार्टअप्स. एंड लास्ट में आ जाती है आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल सक्सेस एलिमेंट्स इन स्टार्टअप डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो इतना वी हैव टू स्टडी एंड लेट्स स्टार्ट इट व्हाट द थिंग्स आर. तो एज आई सेड कि ये जो बाहर अपने जो चीज़ें पढ़ी थी वही है कि मिनी एमवीपी में क्या होगी, पीएमएफ में क्या होगी, एमवीपी टू पीएमएफ की जर्नी क्या है, प्रोटोटाइपिंग एंड अजाइल डेवलपमेंट, एंड फिर लास्ट में आ जाती है क्रिटिकल सक्सेस. आई गेस यहाँ तक अपने आज शायद कर ले. शायद यहाँ के थोड़े एक आध दो टॉपिक भी उठा ले, बट या कर लेते हैं कि इतना है क्या कैसे है. लेट्स सी आउट. Product development in a startup is a dynamic and crucial phase that sets the foundation for the success of a new venture. तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा बिजनेस मॉडल्स क्या है, स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन था. नाउ इट्स अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये प्रोडक्ट किसे डेवलप करना है. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ डायनामिक एंड क्रूशियल फेज दैट सेट्स द फाउंडेशन फॉर द सक्सेस ऑफ अ न्यू वेंचर. Unlike established corporations, startups often operate in resource-constrained environments requiring a strategic and efficient approach to bring innovative ideas to the market. तो वही है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए दे रन इन दैट एनवायरनमेंट ओनली, और उनको बहुत स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करनी पड़ती है चीज़ों को. फिर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन स्टार्टअप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय एजिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड रिलेंटलेस फोकस ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स. तो यही है कि उनका जो अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. एजिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड रिलेंटलेस फोकस. के फोकस होना चाहिए कि भाई कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके बेसिस पे चीज़ें हो रही कि नहीं. एट स्कोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन स्टार्टअप्स इन्वॉल्व्स टर्निंग अ कॉन्सेप्ट और आइडिया इनटू टेंजिबल एंड मार्केट रेडी ऑफरिंग. तो वही है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट में चीज़ें, थियोरेटिकल चीज़ है, उसको आइडिया को लेके टेंजिबल ऑफरिंग या फिर सर्विसेज, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में अपने शेप करते हैं. नाउ दिस जर्नी टिपिकली बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, prompting entrepreneurs to envision a solution. वही हो गया. The initial phase often includes market research, competitor analysis, and a deep understanding of the target audience to validate the concept's viability. तो यही चीज़ पूरी आ गई अपनी क्या क्या चीज़ें होती है. फिर आ जाता है once a viable concept is established, startups move into the product planning and design phase. This involves outlining the product's features, functionality, and user experience. तो तीन चीज़ आ जाती है, प्रोडक्ट फीचर, फंक्शनलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस. यहाँ पे एस्टेब्लिश करना शुरू हो जाती है. फिर the startups frequently embrace agile methodologies, following for allowing for iterative development and quick adjustments based on the user feedback. So agile methodologies be they start implementing in their organization. Fifth, the goal is to create a minimum viable product, a scaled down version of the final product that enables early testing and validation. The minimum viable product बनाना शुरू करता है. minimum viable product बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है because it's a scaled down version of the final product that enables early testing. तो minimum viable product बनाना कैसे है या फिर क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होगी, लेट्स सी अहेड. फिर आ जाता है इटरेटिव टेस्टिंग एंड यूजर फीडबैक और इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्टअप प्रोडक्ट डेवलपमेंट. वही है कि टेस्टिंग तो करनी पड़ती रहेगी. And last में startups understand the importance of staying close to their customers, refining the product based on the real world usage and ensuring that it genuinely addresses the identified problem. So that's the done thing. Now, throughout the product development journey, startups must balance innovation with resource constraints. तो इसमें resource constraints बहुत होता है, तो उसको balance out करके चलना ही एक फायदेमंद चीज़ है. Now, this requires prioritization of features, efficient use of technology, and a keen awareness of the market trends. तो ये क्या कर दिया है, प्रायोरिटाइजेशन मांगते हैं ये सब चीज़ें, कि फीचर्स क्या क्या डालने हैं या फिर टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ करनी है, एंड मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है जिसके जिसके बेसिस पे हम फीचर्स उसमें इन्वॉल्व करें. सो दिस रिक्वायर्स अ प्रायोरिटाइजेशन थिंग. Now the aim is to deliver a product that not only meets the customer expectations but also differentiates the startup in a competitive landscape. कि ऐसा कोई सिर्फ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करे ऐसा नहीं, बट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जो स्टार्टअप की कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है उसमें भी एक पूरा डिफरेंशिएशन फैक्टर खड़ा करके रख दे. फिर आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. स्टार्टअप इज अ मल्टीफेसेटेड प्रोसेस, मल्टीफेसेटेड प्रोडक्ट डिमांड्स क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी एंड अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. तो बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. नाउ इट एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन दैट ड्राइव स्टार्टअप्स टू डिसरप्ट इंडस्ट्री, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कार्व आउट देयर नीश इन द मार्केट. तो यही चीज पूरी बार बार रिपीट करते जाएंगे, एंड
नो इश्यूज के उन लोगों ने रिपीट किया तो अपने को भी रिपीट तो करनी पड़ेगी। चलो फिर आ जाता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, दैट इज एमवीपी। अब एमवीपी क्या है? सो इन डायनामिक वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द कांसेप्ट ऑफ एमवीपी हैज इमर्ज्ड एज अ क्रूशियल स्ट्रेटजी फॉर ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज टू द मार्केट एफिशिएंटली। एंड एमवीपी इज अ scaled down version of a product that allows entrepreneurs to test their concepts with minimal resources before investing significant time and capital into development। तो scaled down version है एमवीपी एक बड़े प्रोडक्ट का। And that is the thing about the MVP. Let us explore what an MVP is, how to build one, and delve into the four compelling examples from the Indian business landscape. Additionally, we will provide insights for the first-time entrepreneurs on crucial considerations while developing an MVP. MVP. Now, what is MVP? Minimum viable product क्या होता है? So, minimum is a fundamental concept popularized by Eric Rice in his Lean Startup methodology. The core idea is to build the smallest version of a product that addresses the key problem or need of the target audience. Just smallest version बनाओ कोई भी प्रोडक्ट का जिससे जो मेन प्रॉब्लम है टारगेट ऑडियंस का दैट गेट सॉल्व आउट। A minimum viable product or a MVP is a product with enough features to attract early adopter customers and validate a product idea early in the product development cycle। फिर आ जाती है इन इंडस्ट्री सच एज सॉफ्टवेयर द एमवीपी कैन हेल्प द प्रोडक्ट टीम रिसीव यूजर फीडबैक एज क्विकली एज पॉसिबल टू इटरेट एंड improve द प्रोडक्ट। अगर सॉफ्टवेयर तो एमवीपी में क्या होता है कि डाल दो प्रोडक्ट को एंड यूजर से फीडबैक लेते जाओ एंड दैट हेल्प्स ग्रेट इन डेवलपमेंट या फिर फर्दर डेवलपमेंट क्या करना है प्रोडक्ट में, तो उसमें बहुत हेल्प करती है ये सिर्फ ये सब चीज़ें। Now, this allows entrepreneurs to validate their assumptions, gather valuable feedback, and iterate quickly based on the market responses. So इसमें MVP कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी लीन, बिल्ड करना होना चाहिए एंड मेजरेबल होना चाहिए। सो MVP वही वो चाहता है। हाउ टू बिल्ड एन MVP? नाउ आइडेंटिफाई द कोर वैल्यू प्रोपोजिशन के मेन चीजें क्या है? डिफाइन द प्राइमरी प्रॉब्लम द प्रोडक्ट एम्स टू सॉल्व एंड आइडेंटिफाई द की फीचर्स दैट प्रोवाइड द मोस्ट वैल्यू टू द यूजर्स। तो आइडेंटिफाई द कोर वैल्यू प्रोपोजिशन के इसमें मेन चीजें क्या है? जैसे प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे तो यूजर्स विल स्टार्ट यूजिंग, तो वही चीज है। फिर आ जाता है क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप। डेवलप अ बेसिक प्रोटोटाइप दैट शोकेसेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। दिस कैन बी सिंपल वर्जन विद अ लिमिटेड फंक्शनलिटी फोकसिंग ऑन द कोर यूजर एक्सपीरियंस। तो प्रोटोटाइप बनाओ। फिर आ जाता है गैदर द फीडबैक। लॉन्च द एमवीपी टू स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स और अ सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस। कलेक्ट फीडबैक ऑन यूजेबिलिटी, फंक्शनलिटी एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। दिस फीडबैक इज इनवैल्यूएबल फॉर रिफाइनिंग एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। तो पहला तो कोर कोर प्रोपोजिशंस क्या क्या है, फिर उसका प्रोटोटाइप बना हुआ, और फिर उसमें फीडबैक लेना शुरू करो एंड लास्ट में है इटरेट एंड इंप्रूव बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड। Make necessary iterations to enhance the product. Continue the cycle of testing, feedback, and improvement until you have a product that resonates with the audience. तो यही है एमवीपी बनाने की पूरी प्रोसेस। नाउ considerations for the first time entrepreneurs developing an MVP। तो पहला तो है फोकस ऑन कोर फंक्शनलिटी, वही सेम चीजें रिपीट करेंगे। Concentrate on the key features that addresses the core problem that the product aims to solve। Avoid unnecessary complexities in its initial version। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज मत डालो, जो अपना फर्स्ट वर्जन है उसमें एमवीपी में इनिशियल कॉम्प्लेक्सिटी डाल के कुछ होना नहीं है। फिर मेक योर प्रोडक्ट और केस सिंपल एंड प्रिसाइज, फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर यू बेस्ट एट। तो यही चीज आ गई। फिर आ जाता है रैपिड इंटरेक्शन, वो बात हुई है। सो एम्ब्रेस कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इटरेट क्विकली बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक टू स्टे अलाइन्ड विद मार्केट नीड्स। दिस इज अ स्टेप वेयर प्रोडक्ट इज येट टू बी वेरी पब्लिक बट बेस्ड ऑन लिमिटेड यूजर फीडबैक। यू चेंज प्रोडक्ट्स, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, अलाइन रिव्यूज ऑफ फ्री सैंपल्स एंड इम्प्रोवाइज ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। तो यही है फटाफट इटरेशन करते रहो या फिर चेंजेस करते रहो, जिससे जो बेहतर प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आए। फिर आता है लीन अप्रोच। अडॉप्ट अ लीन माइंडसेट एम्फसाइजिंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड प्रायोरिटाइज द एसेंशियल एलिमेंट्स। तो लीन अप्रोच रखो, जो भी बहुत सॉर्टेड वे में चलते रहो। फिर आ जाता है यूजर सेंट्रिक डिजाइन। सो प्रायोरिटाइज द यूजर एक्सपीरियंस एंड एंश्योर दैट द एमवीपी इज यूजर फ्रेंडली, इंट्यूटिव एंड अलाइंस विद द प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट ऑडियंस। के जो अपना यूजर यूआई यूएक्स है वो भी अच्छा होना चाहिए, या फिर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मेन तो वही है कि यूजर सेंट्रिक डिजाइन होनी चाहिए। फिर आ जाता है स्केलेबिलिटी। नाउ while building the MVP, consider the potential for scalability. Ensure that the underlying architecture can accommodate future growth without the major overhauls। कि scalable हो सकता है नहीं कि बिजनेस स्केल हो पाएगा तो ही उस चीज का फायदा है, या फिर उसी चीज का उसी चीज में मेन देयर इज अ गुड थिंग गोइंग ऑन। तो ये स्केलेबिलिटी की बात आ गई। फिर आ जाता है एग्जांपल्स ऑफ एमवीपीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर आ जाता है तो इसमें क्योर फिट का एग्जांपल है। सो क्योर फिट हेल्थ एंड फिटनेस बिगिन विद एन एमवीपी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस एंड पर्सनलाइज्ड वर्कआउट रूटीन्स। के बहुत सारी चीजें नहीं, क्योर फिट ने क्या किया? सिर्फ दो ही चीज, तो ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस एंड पर्सनलाइज्ड वर्कआउट रूटीन्स, वही दो चीज दी एमवीपी में। प्लेटफॉर्म address a growing need for the accessible and convenient fitness solutions. Over time, CureFit expanded its offering to include nutrition planning, mental wellness, offline fitness centers, catering a holistic health approach। के ये सब भी आ गया, न्यूट्रिशन प्लानिंग, मेंटल वेलनेस, ऑफलाइन फिटनेस सेंटर्स, सब चीजें आ गई। बट एमवीपी क्या था? तो ये दोनों चीजें, ऑनलाइन ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस एंड पर्सनलाइज वर्कआउट रूटीन्स। तो ये दो चीज ही दे स्टार्टेड, पर्सनलाइज वर्कआउट रूटीन्स एंड ऑफलाइन ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस। तो इन दोनों पे ही दे स्टार्टेड एंड फिर उन लोगों ने इन सब में एक्सपांड करना शुरू किया एक एक चीज में।
अगर बात करें निंजा कार्ड, तो निंजा कार्ड एन एग्रीटेक स्टार्टअप began with an MVP addressing inefficiencies in the traditional supply chain for the fresh produce. The problem connected farmers directly with retailers, eliminating the intermediaries. The initial version focused on solving the logistics and distribution challenges in the agriculture sector. As Ninja Card scaled, it introduced data analytics, credit facilities, and expanded its product range. तो निंजा कार्ड ने पहले तो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन थी उसको ही पहला तो उन लोगों ने थोड़ा सॉर्ट आउट किया और उसके बाद सब चीजें डालते गए, क्रेडिट फैसिलिटीज, डेटा एनालिटिक्स और प्रोडक्ट रेंज सब डालते गए उसमें। फिर आ जाता है रेजर पे। सो रेजर पे अ फिनटेक स्टार्टअप प्रोवाइड स्टार्टेड एज एन एमवीपी एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स और बिजनेसेस इन इंडिया। तो पहला तो वही था, तो कि अगर रेजर पे के पहले आप यूआई यूएक्स देखो किसी चीज का, इट वाज सो बैड, इट वाज लाइक क्या बना रहे हैं ये लोग। एंड आफ्टर रेजर पे इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस बढ़िया है। they started solving that complexities of online payments for businesses in India. The initial version provided a streamlined payment gateway for merchants, aiming to simplify the digital payment process. Over time, Razorpay expanded its services, offering solutions for subscriptions, invoicing, and a range of financial services to the for the businesses. तो ये B2B बिजनेस बहुत ज्यादा है Razorpay का। D2C शायद बहुत इट्स नॉट वेरी मच रेलेवेंट, बट B2B में इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट के हर एक बिजनेस Razorpay पे तो रजिस्टर्ड होता ही है। हाँ, रेज़रपे का ही पेमेंट गेटवे ऑलमोस्ट यूज़ करता है। फिर आ जाता है ओला इलेक्ट्रिक। सो ओला इलेक्ट्रिक का सब्सिडियरी ऑफ ओला स्टार्टेड विद एन एमवीपी फोकस ऑन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एज एन इको-फ्रेंडली अल्टरनेटिव फॉर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। द इनिशियल वर्जन addressed the need for sustainable mobility solutions. Ola's electric MVP allowed users to book electric scooters for short rides. The company has since expanded its electric vehicle and charging infrastructure. हमको सबको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक में कितना प्रॉब्लम्स होता है। जयंत मुंद्रा को अगर आप फॉलो करते हो एंड कि क्या-क्या चीज़ें जयंत मुंद्रा, इफ यू कैन जस्ट सर्च इट आउट ऑन लिंक्डइन, अभी पॉडकास्ट भी आया था राजशमनी के साथ। तो उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक की इतनी बजाई है एंड ही इज़ लाइक द मोस्ट hated person for the Ola Electric, and yeah, he decoded Ola Electric in a very significant depth manner. That's the thing. फिर अपना आ जाता है अनअकैडमी। अनअकैडमी एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिगन विद एन एमवीपी प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस एंड ट्यूटोरियल्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया। द प्लेटफॉर्म एड्रेस अ नीड फॉर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एग्जाम प्रिपरेशन। द एमवीपी अलाउड स्टूडेंट्स टू कनेक्ट विद एजुकेटर्स इन रियल टाइम। अनअकैडमी इटरेटेड बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक, इंट्रोड्यूसिंग फीचर्स लाइक recorded lectures, doubt resolution, and diverse course offerings. तो अनअकैडमी जर्नी पता है, लास्ट लेक्चर में भी आई said about the Unacademy, and I also mentioned Inc 42 का it's there's an article about Unacademy in Upgrade। तो वो ज़रूर से पढ़ना एंड यू विल गेट अ गुड सॉर्ट ऑफ आइडिया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या-क्या चीज़ें चल रही थी उसमें। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्या है। इस लेक्चर में भी आई एम जस्ट मेंशनिंग द सेम। फिर अपना आ जाता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट में क्या-क्या चीज़ है? सो achieving product market fit is often considered the holy grail of validation that product or service resonates with its intended users and addresses a genuine market need। कि भाई जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया था उनको ये पसंद आ रहा है एंड उसको मजा आ रही है। This pivotal concept, coined by entrepreneur and venture capitalist Mark Anderson, signifies the alignment between what a startup offers and what the market demands. What a startup offers and what the market demands. तो ये चीज आ जाती है कि स्टार्टअप ऑफर क्या कर रही है एंड मार्केट की ये चीज की डिमांड है कि नहीं। So that's the main thing. What a startup offers and what the market demands. Product market fit occurs when a startup's product not only satisfies a real market need but does so in a way that resonates deeply with its target audience, resulting in widespread adoption and customer satisfaction. Now, it's a sweet spot where the product seamlessly aligns with the market's desire and demands, leading to organic growth. तो इससे ऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी खासी आ जाती है बिकॉज प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है। लोग खरीदना चाहते हैं एंड दैट्स वेयर द ट्रू ग्रोथ अनलॉक्स। Now, identifying product market fit involves gauging the market's response to the product. Some key indicators include rapid user adoption, positive customer feedback, strong retention rates, and a growing demand without extensive marketing efforts. When customers become the product's advocates, willingly spread the word, it's a clear sign that a product market fit is achieved. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है दैट्स द बेस्ट सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग के आप वो पुश नहीं कर सकते वो इफ कस्टमर्स लाइक तो वो सामने से ही किसी और को बताते जाते हैं एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ marketing that can be achieved by any business। फिर आ जाता है relevance of product market fit for the startups। तो क्या है increased valuation and investor confidence, foundation for the sustainable growth and reduce the marketing cost। कि एक बार product market fit हो गया तो वैल्यूएशन भी मिल जाती है, इन्वेस्टर भी पैसा डालने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आ जाता है फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। वही आ जाता है कि भाई यहाँ से नाउ यू कैन ग्रो। फिर आ जाता है एंड लास्ट में रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट्स। सो दिस इज द थिंग। नाउ एक एक चीज को खोल खोल के पढ़ते हैं। नाउ फाउंडेशन ऑफ फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे है? So product market fit is the foundation upon which sustainable growth is built. Without it, startups may struggle to gain traction, face difficulties in attracting investors, and risk premature scaling that could lead to inefficiencies and resource depletion. तो foundation for sustainable growth ही है एक अपना ये जो product market fit अगर मिल गया तो उसके बेसिस पे you can start जो अपनी मोटी ग्रोथ है वो वहां से निकाल सकते हैं।
फिर आ जाता है रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। A product that fits well within its market requires less aggressive marketing efforts. Word of mouth and organic growth becomes powerful drivers, saving startups significant marketing expenditure. This efficiency in customer acquisition contributes to a more cost-effective and sustainable business model. तो एक बार प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया ना, उसके बाद मार्केटिंग के खर्चे भी मार्केटिंग के जो खर्चे होते हैं वो भी गेट रिड्यूस। तो ये चीज़ हो जाती है एक प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में। फिर आ जाता है इंक्रीज वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो आई हैव सीन दिस वेरी मच कि भाई जब प्रोडक्ट मार्केट फिट किसी भी प्रोडक्ट का होता है ना, एंड देन दे व्हेन दे अप्रोच इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स सीक दे गिव मनी टू देम। सो इन्वेस्टर्स सीक स्टार्टअप्स विद अ डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोडक्ट मार्केट fit as it significantly reduces the risk associated with their investment. A product that resonates with the market enhances the startup's valuation and instills confidence in investors, fostering a positive cycle of funding and growth. तो वही एक बार पीएमएफ मिल गया ना, तो फिर देयर इज अ गुड ग्रोथ साइकिल दैट कैन हैपन along with the investor, and वही है कि उनको तो मिल ही सकता है। फिर आ जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ गुड मार्केट गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो इसके 5 एग्जांपल 5 देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के जिससे प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर अच्छा हुआ तो एडवांटेजेस क्या मिल सकता है। तो पहला तो है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। फिर हो जाती है ब्रांड रिकग्निशन, इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन, मार्केट लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो यही पढ़ना शुरू करते हैं अब एक-एक चीज़ कि क्या-क्या चीज़ें आती है। तो पहला है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। सो प्रोडक्ट दैट फिट्स वेल विद इन इट्स मार्केट हैज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन कस्टमर एक्विजिशन। तो एक बार फिट हो गया मार्केट में और उसकी मूड क्रिएट होना शुरू हो गई। सो मूड इज अ वर्ड वेयर व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर मी, एंड मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। एसएम में यू वुड हैव स्टडीड के ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो रेप्लिकेट ना हो सके, दैट्स अ मूड। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ कस्टमर एक्विजिशन। Then the second, positive user experience and satisfaction associated with PMF make it easier to attract new customers and retain existing ones, creating a loyal user base. तो क्या कर सकते हैं, जो जिसने एमबीपी यूज किया था उसका टेस्टिमोनियल ले लो। टेस्टिमोनियल देके उसको ही फिर आगे यूज करना शुरू कर दो। सो दैट्स व्हाट दिस कस्टमर एक्विजिशन एंड पीएमएफ वर्क्स आउट फॉर। फिर आ जाता है व्हेन अ प्रोडक्ट इज अलाइन्ड विद द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इट्स टारगेट मार्केट, इट्स मोर लाइकली टू सैटिस्फाई कस्टमर्स एंड मीट देयर एक्सपेक्टेशन। फिर आ जाता है दिस लीड्स टू हायर कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी व्हिच कैन ड्राइव रिपीट बिजनेस एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। तो ये मैंने जो बात की थी वही थी कि कस्टमर एक्विजिशन एक बार हो गया देन इट स्टार्ट्स रोलिंग अराउंड इन अ गुड फैशन के क्या क्या चीजें हो रही है या फिर क्या क्या चीजें नहीं हो रही है। एंड एक बार एमवीपी से टेस्टिमोनियल्स आ गए, फिर तो इट्स इजी टू सेल। पहला कस्टमर लाना डिफिकल्ट है, फिर पहले से फर्स्ट टू 10 कस्टमर्स आर डिफिकल्ट, फिर 10वें के बाद तो देयर इज अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ नीड एंड टेस्टिमोनियल्स के ही बेसिस पे प्रोडक्ट स्टार्ट्स गेटिंग सोल्ड। फिर आ जाता है ब्रांड रिकग्निशन। सक्सेसफुल पीएमएफ ऑफन लीड्स टू इंक्रीज ब्रांड रिकग्निशन। अ प्रोडक्ट दैट एड्रेसेस मार्केट नीड्स इफेक्टिवली बिकम सिनोनिमस विद क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, एनहांसिंग द ब्रांड्स रेपुटेशन इन द आईज ऑफ कंज्यूमर। तो वही हो जाता है, ब्रांड रिकग्निशन बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन। PMF allows companies to innovate and differentiate their products based on validated customer feedback. By understanding what works and what doesn't, businesses can tailor their offerings to stand out in the market and stay ahead of the competitors. के इनोवेशन करते रहना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे एक बार एमवीपी पीएमएफ मिल भी गया, बट फिर भी उसमें इनोवेट करना पड़ता है एंड डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि भाई मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स है उससे आर यू डिफरेंट और नॉट। So that's what innovation and differentiation talks about. फिर आ जाता है market leadership. Companies that achieve and maintain product market fit are better positioned to become market leaders. Their products become benchmark, setting the standard for others in the industry. ये एप्पल ने जब आईपैड और आईफोन लॉन्च किया था, सो दैट वाज अ बेंचमार्क। क्या आईफोन एक बार लॉन्च हो गया फिर तो ये कि ऐसा बेंचमार्क सेट हो गया था कि इसके ऊपर ही अगर कुछ आ रहा है तो यूजफुल है, अगर नहीं है तो फिर इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। लीडरशिप पोजीशन कैन बी चैलेंजिंग फॉर कॉम्पिटिटर्स टू ओवरकम। तो यही है मार्केट लीडरशिप की बात। फिर आ जाता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। Businesses with PMF can make more informed and strategic decisions. With a clear understanding of customer needs and market dynamics, they can focus resources on areas that truly matter, making their operations more efficient and effective. The strategic decision making, एक बार पीएमएफ मिल जाता है ना, पीएमएफ तक की पीएमएफ तक की जर्नी बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद यू स्टार्ट मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, जिससे देयर इज अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन हैपन इन द डिसीजन मेकिंग। फिर आ जाता है स्ट्रेटजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू फाइंड द बेस्ट मार्केट फिट। तो पहला तो है प्रोडक्ट मार्केट फिट को कैसे हाउ हाउ अ फाउंडर कैन फाइंड इट आउट। तो पहला तो है डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, फिर इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आ जाता है, फिर फोकस ऑन कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड मेजर लास्ट में आ जाता है मेजर एंड एनालाइज द मेट्रिक्स।
नाउ फिर आ जाता है डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। फर्दर, they must conduct thorough market research, engage in user interviews, and collect actionable feedback to gain insights into customer pain points, preferences, and behaviors. फिर just a minute, I just want to drink water. सो स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो उसमें डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, फिर इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है, फिर फोकस ऑन कोर वैल्यू प्रोपोर्शन, एंड लास्ट में मेजर एंड एनालाइज द मैट्रिक्स। तो पहला तो डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, तो वो कैसे लाएंगे? सो एंटरप्रेन्योर्स मस्ट इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। फर्दर, दे मस्ट कंडक्ट अ थरो मार्केट रिसर्च, एंगेज द इन यूजर इंटरव्यूज, एंड कलेक्ट एक्शनेबल फीडबैक टू गेन इनसाइट्स इनटू कस्टमर पेन पॉइंट्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स। के कस्टमर को व्हाट द पेन पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर्स, डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग के कस्टमर को क्या चाहिए, सो ये फाइंड करना होगा। फिर आ जाता है इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सो एंटरप्रेन्योर्स नीड टू अडॉप्ट एन इटरेटिव अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, गैदर रियल वर्ल्ड फीडबैक के मिनिमम करते रहो, एक ही सेम चीज रिपीट हो रही है इसमें, देन यूजेस दिस फीडबैक लूप टू रिफाइन द प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली, एंश्योरिंग दैट इट इन्वॉल्व्स इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट डिमांड्स। तो पहले जितनी बात हुई, वही चीज फिर से रिपीट होती है। फोकस ऑन कोर वैल्यू प्रोपोर्शन, पहले तो बात की, वंस डेवलपमेंट इज कंप्लीट, दे मस्ट क्लियरली डिफाइन द कोर वैल्यू प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द की फीचर्स दैट डिफरेंशिएट्स द प्रोडक्ट from competitors and directly address the customer needs. And lastly, it is then important to keep the initial version of the product simple and focused to avoid the फ्यूचर ब्लोट। तो वही चीज है कि वैल्यू प्रोपोर्शन एकदम अच्छे से डिफाइन करके ही प्रोडक्ट बनाओ। फिर आ जाता है मेजर एंड एनालाइज द मैट्रिक्स। फाइनली एन एंटरप्रेन्योर शुड एस्टैब्लिश केपीआईज, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे दैट अलाइन विद द प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बेसिस पे उसको केपीआई डिटरमाइन कर देना चाहिए। टू एंश्योर कंटिन्यूड सक्सेस, दे मस्ट मॉनिटर मैट्रिक्स सच एज यूजर एंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये तीन चीजें क्या क्या? यूजर एंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दे हैव टू कंटिन्यूअसली measure की क्या-क्या चीजें हो रही है। Now this quantitative measures provide valuable insights into the product success within the market. So measure and analyze the metrics. फिर आ जाता है product market fit is not just a milestone. It's a continuous process that requires dedication to customer satisfaction, adaptability to change, and a commitment to the innovation. The competitive advantage derived from a PMF can be instrumental in shaping a company's success and longevity in the market. Now, what are the challenges that are faced in finding the product market fit? So PMF is a significant challenge because it necessitates a delicate balance between a product and ever-changing demands of the market. Identifying and meeting genuine customer needs while simultaneously adapting to the dynamic market conditions requires acute intuition, continuous iteration, and a profound understanding of user feedback. The challenge lies in the uncertainty surrounding the product market dynamics, potential shifts in the consumer preferences, and intense competition faced by the startups. Additionally, misconceptions about the market or insufficient validation of assumptions can lead to misalignment, making attainment of a PMF a formidable task. Startups must navigate this complex landscape, staying agile, receptive feedback, and resilient to face the uncertainties of successfully conquer the challenges of achieving and maintaining product market fit। तो यही पूरा ज्ञान वही पूरा पुराना दिया है। तो what are the challenges? तो पहला तो है assumption की misalignment. So entrepreneurs may face challenges when their assumption about the market needs and customer preferences do not align with the reality, कि उनको लगता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो, सब फाउंडर को ऐसा लगता है कि मेरा प्रोडक्ट तो धांसू ही है एंड वो ग्रो ही कर जाएगा, बट मार्केट रियलिटी कम हो सकती है कि ये इतना ही ग्रो कर सकता है। दैट्स व्हाट assumption का मिसअलाइनमेंट हो सकता है फाउंडर्स के लिए। सेकंड पॉइंट इज इट्स एसेंशियल टू स्टे एडेप्टेबल एंड बी विलिंग टू पिवट बेस्ड ऑन द वैलिडेटेड फीडबैक। तो पिवट भी मारना पड़ सकता है कि भाई जो जो सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे कहीं और भी कुछ और चीज भी बनाना शुरू करनी पड़ सकती है, बिकॉज वो चीज जो पहले बनाना शुरू किया था वो नहीं बिक रही है एंड अ पिवट इज रिक्वायर्ड। फिर आ जाता है प्री मैच्योर स्केलिंग। सो प्री मैच्योर स्केलिंग और एक्सपांडिंग ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज too quickly before achieving product market fit can be detrimental. Scaling prematurely may result in increased cost without proportional revenue growth, leading to a financial strain. For example, without optimizing success in one city or state, some companies expand to the entire country, pressuring their overheads, leading to stress financials and loses one may not be able to afford. तो वही है कि एक सिटी में तो अभी खुला है एंड वो उसको कॉन्कर नहीं किया अभी तक, और उसके पहले 2 3 4 सिटी में दे आर ओपनिंग देयर हब्स। तो ये नहीं करना है।
कि पहले इसको मैक्सिमाइज करो, इसको मेक इट अ स्टार प्रोडक्ट एंड फिर देन एक्सपांड इनटू द अनदर सिटीज। तो प्री मैच्योर स्केलिंग भी स्टार्टअप्स कर लेते हैं, एंड दैट्स अ मेजर इश्यू इन द फाइंडिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट। फिर आ जाता है इनएडिक्वेट कस्टमर फीडबैक। सो लिमिटेड और इनसफिशिएंट कस्टमर फीडबैक कैन इम्पीड द जर्नी टू द प्रोडक्ट मार्केट फिट। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंसेस में रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट दैट फेल्स टू गेन ट्रैक्शन। के जो कस्टमर फीडबैक होता है वो इट्स नॉट इनफ, और एडिक्वेसी नहीं, उसकी प्रॉपर एडिक्वेसी नहीं होती और वो इनएडिक्वेट रहता है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट कस्टमर फीडबैक। फिर आ जाता है कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स। द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज डायनामिक एंड न्यू एंट्रेंट्स और चेंजेस इन एक्जिस्टिंग कस्टमर्स कैन इम्पैक्ट स्टार्टअप्स परस्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। कि मार्केट तो यार चेंज होता ही रहने वाला है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया। तो इट कॉम्पिटिटिव जो उसका एडवांटेजेस है, डायनामिक्स है, वो ही पूरा चेंज होता है। So that's the thing. So remaining vigilant and adaptable to the market shifts is crucial. One should use Porter's five forces models to understand the competitive advantage surrounding an industry. तो ये हो गया competitive dynamics की बात। ये फिर वही पॉइंट आएगा। सो चैलेंजेस इन फाइंडिंग पीएमएफ क्या-क्या है? पहला तो है असम्पशन मिसअलाइनमेंट, कि जो असम्पशन लिया था वो नहीं हुआ। फिर आ जाता है प्री मैच्योर स्केलिंग, स्केलिंग कर लिया, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स को नहीं किया प्रॉपर्ली, एंड लास्ट में इनएडिक्वेट जो कस्टमर फीडबैक है, वो कस्टमर फीडबैक जो चाहिए था उतना नहीं मिला। So this was the challenges in finding the product market fit. Now, examples failed and successful product market fits. So while there are many successful startups in the startup ecosystem, there have been instances where companies face challenges in achieving a strong product market fit. Here are the examples of startups that struggled with the same. तो पहला तो है स्नैपडील्स अनफोकस एक्सपांशन। तो स्नैपडील ने वही किया था, स्नैपडील एक टाइम पे इट वाज कॉम्पिटिंग विद फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। कुणाल बहल शायद उसका फाउंडर है टाइगर कैपिटल का। रीड ही स्टोरी, मतलब शायद शायद रीड मत करो, मतलब मैंने भी नहीं किया, बट ही इज अ गुड फाउंडर, या फिर फाउंडर तो नहीं बोल सकते, ही इज अ गुड शार्क एंड इन्वेस्टर। उन्होंने बहुत सारे डील्स में दे हैव इन्वेस्टेड। टाइगर कैपिटल इज अ गुड invested in many of the startups recently. So Snapdeal, an Indian e-commerce platform, faced challenges in maintaining a clear PMF due to rapid and unfocused expansion. It is an attempt to compete with major players like Flipkart and Amazon. Snapdeal expanded its product categories extensively. This led to lack of clarity in its value proposition, causing confusion among consumers. क्या Snapdeal को पता ही नहीं था कि क्या कर रहा है इधर। अल्टीमेटली वैसा हो गया था कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन वाज गोइंग गुड, बट स्नैपडील को पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। So the company's failure to differentiate itself in a highly competitive market contributed to a diminished product market fit, ultimately impacting its market share. तो ये हो गया स्नैपडील्स का अनफोकस्ड एक्सपांशन। फिर आ जाता है स्टेजिला's strategic miss and closure. Stagila, startup in the Indian hospitality space, encountered difficulties in finding a stable PMF. Initially launched as an online platform for hotel bookings, Stagila later pivoted to focus on homestays. तो ये pivot मारना पड़ता है। This pivot indicated challenges in aligning the product within the market. कि ये नहीं हो रहा था, होटल बुकिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पे, इतना इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं था, या फिर एक्स वाई जेड रीजन। वो बहुत बड़ा चैलेंज आके खड़ा रह गया कि उसको पिवट करना है कि नहीं करना। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू रिडिफाइन इट्स वैल्यू प्रोपोर्शन, स्टेजिला स्ट्रगल टू सिक्योर अ सस्टेनेबल पीएमएफ एंड इवेंचुअली शट डाउन इट्स एंटायर ऑपरेशंस। तो ये हो गया कि पूरा ही पूरा ऑपरेशन ही उनको बंद करना पड़ा। फिर आ गया एमयू सिग्मास डाइवर्सिफिकेशन चैलेंजेस। एमयू सिग्मा डेटा एनालिटिक्स कंपनी फाउंडेड इन इंडिया फेस challenges in maintaining a clear PMF as it expanded globally. While the company achieved success in its early years by providing analytic solutions, its subsequent diversification into various businesses diluted its focus. The lack of a well-defined and communicated value proposition across its diverse offerings made it challenging to sustain a strong PMF. This impacted the company's growth trajectory and led to the leadership changes. तो एमयू मतलब यही था कि भाई वो जो अपना डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, बट नहीं बिक पाया, और पीएमएफ ने मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल पाया, तो क्या करें, उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ा। लास्ट में गूगल ग्लास, सो एन ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट। तो ये इट वाज लाइक यहाँ पे मेटा ग्लासेस या फिर वैसी चीज है, वैसा कुछ बनाना ट्राई कर रहे थे गूगल ग्लासेस। सो एन ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट failed to achieve widespread acceptance. While the technology was innovative, the product forced issues related to privacy concerns, a hefty price tag, and a limited practical use case. The market wasn't ready for such a disruptive technology, leading to discontinuation as a consumer product. तो पहले उस टाइम पे the market wasn't ready for the Google Glass, इसलिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी तो थी, बट एक ऐसा कुछ बढ़िया नहीं हो पाया, बड़ा नहीं हो पाया। So that's what the Google Glass project was. Now, these examples highlight the complexities and pitfalls that startups may encounter in their quest for a robust PMF.
The ability to align a product closely with the market needs and maintain that alignment as a market evolves, it's a continual challenge that requires strategic vision, adaptability, and a deep understanding of customer dynamics. Let's explore examples of successful PMF. तो ये जो फेल्ड थे वो वाले थे, अब सक्सेसफुल पीएमएफ कौन-कौन से हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो पहला तो भारत पे, तो फ़ोनपे का अशनीर ग्रोवर के साथ ये चीज़ शुरू हुई थी। So Bharat Wave, a fintech startup from India, achieved significant success in establishing a strong PMF by addressing the needs of small businesses. The company focused on simplifying the digital payments for merchants, especially those with access to the card payment facilities. BharatPay's QR code-based payment system gained rapid acceptance among local shopkeepers, providing them with an easy and efficient way to accept the digital payments. तो भारत में ने हर जगह पे QR कोड लगवा दिया था. So that was the strategy of Ashneer Grover and doing that same. Now, the strong alignment of BharatPay's product with the market demand for hassle-free digital transactions contributed to its success and rapid growth. So that was BharatPay. फिर अपना आ जाता है उड़ान. Now, Udaan, an Indian B2B e-commerce platform, successfully founded a PMF by addressing the challenges faced by small and medium businesses in the supply chain. Udaan's platform connects manufacturers, wholesalers, and retailers, streamlining the procurement and distribution processes. The platform's success is attributed to its ability to simplify and digitize the traditional supply chain operations, catering to the specific needs of the SMBs. Udaan's rapid growth and widespread adoption highlights its strong PMF in the Indian market. तो वही है कि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज का बिजनेसेस थे उनको सप्लाई चेन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, एंड दैट्स व्हाई उड़ान वाज लॉन्च. एंड उड़ान created a good software जिससे small and medium businesses को वो हेल्प कर सके, एंड दैट्स व्हाट द स्ट्रॉन्ग पीएमएफ वाज डेवलप्ड. फिर मीशो का भी दैट्स अ ग्रेट स्टोरी. मीशो की इफ यू रीड अ स्टोरी, इफ यू see any video, it's a great story जैसे it got developed. So Meesho, social commerce platform, found success by aligning its product with the needs of individuals looking for supplementary income opportunities. Meesho enables users to start their own online business by selling products to the social networks. तो यहाँ पे I am from सूरत, तो सूरत में ऐसा बोला जाता है कि सूरत इज द मतलब शायद इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, मतलब जो बाई साइड इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, कि यहाँ पे लोग खरीदते हैं वैसे लोग बहुत कम है. बाई साइड इंटरनेट पेनिट्रेशन इज वेरी लो, बट यहाँ से सेल साइड इंटरनेट पेनिट्रेशन इज वेरी हाई. कि ये लो है, बट सेल साइड के जो बेच रहे हैं पूरे भारत को, सेल साइड इंटरनेट पेनिट्रेशन इज वेरी हाई. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ मीशो. के मीशो भी इट्स अ वेरी गुड सॉफ्ट गुड वेबसाइट, दैट ऐप दैट हैव बीन मेड, स्टार्टअप दैट हैव बीन सूरत के बहुत सारे स्टार्टअप्स मीशो पे लिस्टेड, एंड दे डू द ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम हियर टू द एंटायर नेशन. सो दैट्स द पावर ऑफ मीशो. टीयर टू टीयर से सिटीज में कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, एंड दे टेक दैट थिंग टू द ह्यूज प्लेटफॉर्म. So the platform PMS lies in its ability to empower individuals, particularly women, to become entrepreneurs without the need for significant upfront investment. Misho's growth is a testament to its successful alignment with the market's demand for the accessible entrepreneurship opportunities. So this examples illustrate how startups in India have successfully identified and addressed the market needs, leading to a strong product market fit. In each case, the companies were able to create products that resonated with their target audience, resulting in rapid adoption and sustained growth. तो यही पूरी चीज आके खड़ी हो गई. Now we will move from journey from a minimum viable product to achieving the product market fit. तो पूरी journey कैसी है? So understanding the journey from MVP to PMF is extremely important for any entrepreneur, and for that, let us delve into a fictional case study focusing on the journey from a minimum viable product to achieving PMF. So hypothetical case study to understanding the journey from MVP to PMF, और बाद में real life case study भी है. So background, दो स्टूडेंट है, सिया एंड समीर. तो ये दो कोयरे हैं जो सिया एंड समीर है, enrolled in a university, recognize the need for a digital platform that would enhance collaboration and communication among students various departments. क्यों ये various departments है उनको collaborate करना है इसके साथ. So उसका communication के लिए बनाना था. So they envisioned a tool that could facilitate project discussions, resource sharing and event coordination, ultimately fostering a sense of community. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना है जिसके ये पूरी कोऑर्डिनेशन हो सके. तो so this is the idea of the entire background. Now, phase one MVP development कैसे करेंगे? Yarana.io beta. So, Ria and Samir started by creating basic MVP called Yarana.io beta. The initial features included discussion forums. तीन चीजें थी, discussion forums से resource repository थी, event listing थी, तीन ही चीज थी. Now, they rolled out the MVP to a small group of students within the university and collected valuable feedback through surveys and direct interactions. तो ये हो गया. Now, the MVP simplicity allowed for quick iterations based on user product. So challenges क्या था? तो limited initial user engagement, and second था identify the need for features such as real time messaging and project collaboration tools. तो ये दो needs आके खड़ी हो गई. So
ये जो याराना डॉट बीटा है ना, इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर करना है तो यू कैन सी बीप स्टार्टअप, बीप ऐप ऐसा कुछ है, बीप, हाँ बीपी है, बीप ऐप। एंड दे हैव गुड सॉफ्टवेयर फॉर द स्टूडेंट डिस्कशन, कॉलेज डिस्कशंस। सो दिस इज द फेज वन। फिर आ जाता है फेज टू, दैट इज इटरेटिव डेवलपमेंट, टेकिंग द फीडबैक इनटू अकाउंट। रिया एंड समीर इटरेटिवली developed yarana.io version 1.0 1.0. They introduced real-time messaging, collaborative project space, and a personalized dashboard. The enhanced version was rolled out to a wider audience and user engagement began to improve. The platform gained traction as students started using it for project discussion and resource sharing. Challenges क्या था? Technical glitches आना शुरू हो गए some users के, and identify the need for better onboarding to improve user adoption. कि better onboarding जिससे AI के थ्रू अच्छी चीज बन सके। तो उसमें फेज 3 में क्या हुआ, तो उन्होंने यूजर सेंट्रिक रिफाइनमेंट करना शुरू हो गया। To address the technical issues and improve user onboarding, Ria and Samir launched Yarana.io 2.0. They conducted workshops to guide students on using the platform effectively. Additionally, they introduced gamification elements on incentivizing the participation. The improvements led to increased user satisfaction with more students actively participating in discussion and collaborative projects. Success क्या हुआ, so improved user engagement and satisfaction हो गया, and last में enhanced the platform usability होगी। फेज 4 क्या था? अचीविंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट। ईयर 4 में आके प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया। सो याराना आयो कंटिन्यू टू इवॉल्व बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक। रिया एंड समीर कोलैबोरेटेड विद स्टूडेंट ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म, further integrating it into the student community. As the platform became an integral part of the student life, it achieved product market fit. Yarana Raya successfully addressed the need for a collaborative space, contributing to improved student interactions and project outcomes. Success क्या हुआ? तो high user retention and participation हुआ, and second, recognition as an essential tool within the student community. So this is a good example of Beep only, मतलब Beep ने ऐसे ही पूरी जर्नी की थी। आई हैव सीन, मतलब शार्क टैंक की फर्स्ट सीजन में आया था, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम they have created this sort of product only. So Yarana IO's journey from an MVP to achieving product market fit exemplifies the iterative process of product development. Ria and Sami's commitment to user feedback, continuous improvement, and a student centric approach played a crucial role in the success of their classroom project. Yarana.io became not just a digital platform but a community hub, highlighting the importance of understanding and addressing the unique needs of the यूजर कम्युनिटी। फिर आ जाता है रियल लाइफ की स्टडी फ्रॉम एमबीबी टू पीएमएफ। तो ये है डंजो की पूरी जर्नी। सो इन द बस्लिंग सिटी ऑफ बैंगलोर, a startup named Dunzo embarked on a transformative journey from building MVP to achieving PMF. So founded in 2015 by Kabir Biswas, Ankur Agarwal, and Dalvir Suri and Mukund Jha, Dunzo set out to address the challenges of urban living by offering a hyper local delivery service. तो ये पूरी जर्नी है। इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी के सेकंड है अपनी रेजर पे की पूरी जर्नी है। चलो पढ़ ही लेता है, ठीक है, अब इतना पढ़ ही लिया है तो फटाफट पढ़ लेता है। So phase 1 में डंजो ने एमवीपी कैसे बनाया? So Dunzo's initial concept was simple yet innovative to create a platform that allowed users to outsource their daily task, या जो डेली टास्क है वो किसी पर्सनल असिस्टेंट को दे देता है। The MVP launched in 2015 started by offering task-based assistance such as grocery shopping, picking up and dropping of items and other errands. The app enabled users to delegate tasks through a chat interface, and Dunzo's delivery personnel known as Dunzo partners would fulfill this task. कि Dunzo partner आके वो चीज कर देता था। So challenges limited user adoption due to novelty of the service, and operational challenges आना शुरू हो गए टास्क एग्जीक्यूशन में। फिर फेज 2 में क्या हुआ कि इटरेटिव डेवलपमेंट किया एंड एक्सपेंशन किया। सो रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर रिफाइनमेंट, Denso underwent iterative development to enhance its service based on user feedback. The team expanded its service offerings to include food delivery, pharmacy pickups, and more. तो Denso ने ये सब चीजें डालना शुरू कर दी। By focusing on improving operational efficiency and leveraging data-driven insights, Denso aimed to make its platform more user-friendly and responsive. Challenges क्या हुआ? तो पहला तो आया intense competition in the on-demand delivery space, and second, balancing expansion with maintaining the service quality. तो ये अपने दो चीज आ गई इटरेटिव डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन की बात में फेज 2 में। फिर अपना फेज 3 आया, दैट इज यूजर सेंट्रिक अप्रोच एंड द प्रोडक्ट एनहांसमेंट। दिस pivotal moment came when the team embraced a user-centric approach. The company prioritized understanding the specific needs and pain points of its users, tailoring the platform accordingly. They introduced features like real-time tracking, instant order confirmation, and expanded their partner merchant network. And last में आ गया Benzo also focused on enhancing the reliability and spread the speed of its delivery. Success क्या हुआ? A significant increase in user engagement and retention. लास्ट में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एज सेटिस्फाइड यूजर्स शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो ये हो गया फेज 3। फिर लास्ट में आ गया फेज 4, so achieving a product market fit 2019 to present. As Denso continued to refine its platform based on the user insights, it reached a critical tipping point where the platform achieved PMF. The convenience, reliability, and versatility of Denso's services resonated strongly with users in bustling areas. Denso became a go-to platform for a wide array of on-demand services, from grocery shopping to the medical medicine delivery. Success, तो higher user retention आ गया and expansion to the multiple cities across India. So Dungeon's journey from MVP to PMF exemplifies the iterative and adaptive nature of the startup
startup development. By persistently refining its services, understanding the user needs, and strategically expanding its offerings, Dunzo successfully established itself as a prominent player in the hyper-local delivery space in India. The company's commitment to continuous improvement and user satisfaction has not only led to its own success but also contributed to the evolution of the on-demand delivery service industry in the Indian market. Dunzo's story serves as an inspiring example of how a startup can navigate challenges, learn from user interactions, and ultimately achieve a strong product market fit. नाउ रियल का सेकंड केस स्टडी कौन सी है अपना रेजर पे की सो रेजर पे pioneering the fintech excellence from MVP to PMF in the dynamic landscape of Indian fintech. Razorpay, founded by Harshil Mahathur and Shashank Kumar in 2014, stands as a prime example of a startup that successfully transitioned from a MVP to a product market fit. तो कैसे रेजरपे ने पूरी जर्नी की तो पहला तो रेजरपे का एमवीपी क्या था सो रेजरपे commenced its journey with a mission to simplify online payments for businesses in India. The MVP focused on providing a straightforward payment gateway solution for merchants, especially for small and medium enterprises. The founders recognized the complexities and challenges in online transactions. कि क्या-क्या challenges थे वो recognize किए and Razorpay's initial version aimed to streamline the payment process. Now challenges क्या होता है limited market awareness and adoption of online market payment gateways. कि पहले तो उतना था ही नहीं मार्केट में ये चीज़ थी ही नहीं पेमेंट गेटवे वाली एंड सेकंड इज अर्ली स्टेज टेक्निकल ग्लिचेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ चैलेंजेस के टेक्निकल ग्लिचेस तो आने ही है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बन रहा है तो बाद में वो जाके सॉर्टेड होता है फिर सेकंड फेज आया इटरेटिव डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट एक्सपांशन सो बिल्डिंग ऑन द फीडबैक रिसीव्ड रेजर पे इटरेटिवली डेवलप्ड इट्स प्लेटफॉर्म टू ओवरकम द टेक्निकल challenges and enhance user experience. The team expanded its suite of services, introducing features like payment link, subscription billing, and developing friendly APIs. Razorpay's strategy included collaborating with businesses and startups, fostering a developer community and creating educational content to increase awareness about the online payments. तो उन्होंने पूरा businesses के साथ influencers के साथ they started collaborating and awareness spread करना चालू होगी and challenges देखे तो intense competition in the fintech sector and second the building trust in the businesses. तो ये there was a major challenge that occurred in the phase 2. फिर अपना जाता है फेज 3 तो उसमें यूजर सेंट्रिक एनहांसमेंट्स एंड मार्केट पेनिट्रेशन किया सो रेजर पे adopted a user centric approach deeply understanding the pain points of the businesses. The platform introduced advanced analytics, fraud payment prevention and mechanisms, and customizable solutions. Now recognizing the growing demand for digital transactions, Razor Pay expanded its service beyond payment gateways, offering solutions for digital wallets, UPI, and business banking. तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ जितने भी चीज़ें थी डिजिटल वॉलेट चाहिए थी यूपीआई चाहिए थी business banking चाहिए थी उन सबको they started imbibing in their models. Now this strategic moves aimed to penetrate diverse segments of the market and cater to the evolving needs of businesses. अब इसमें सक्सेस कैसे आई तो सर्ज इन मर्चेंट एडॉप्शन पार्टनरशिप्स एंड सेकंड आ गया बिकमिंग अ ट्रस्टेड नेम इन द इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम. So this was the phase 3. फिर अपना आ जाता है phase 4 that is achieving product market fit. So Razorpay reached a significant milestone when it achieved PMF. The platform became a synonymous with seamless and secure online transactions for business of all sizes. Razorpay's robust suite of services combined with its commitment to innovation and customer satisfaction positioned it as a market leader in India's fintech space. The company expanded its footprint, catering not only to the startups but also to the large enterprises and financial institutions. इसकी सक्सेस क्या बात है? So higher user satisfaction and retention rates, and second, recognition as one of the India's leading fintech companies. So this is the achieving a product market fit of the entire Razorpay. So Razorpay's evolution from an MVP to achieving PMF reflects the company's strategy approach to the fintech solutions. By addressing market needs, iterating on its offerings, and adopting a user-centric mindset, Razorpay not only overcome challenges but also become a driving force in revolutionizing the digital payments in India. The case of Razorpay exemplifies how a fintech startup can navigate the competitive landscape, align with market demands, and solidify its position as a key player in the financial technology sector. रियल लाइफ केस स्टडी स्विगी की है अब ये थोड़ा खुद से पढ़ लेना and yeah, I guess let's stop this thing right now and prototype and agile development अपने next lecture में शुरू करेंगे because it's already 40-45 minutes and फिर से it will take a lot of time इसमें and so yeah, let's meet again in the part 2 of the chapter 3 and yeah, that's me. See you, Pratham Magala, signing off. Thank you. Bye bye.